Welcome to NIOS. The title of the video is Environmental Degradation. Learners, as you know, in the previous lesson we learnt about concept of environmental degradation. Today we will know about the causes of environmental degradation. Social factors. Let us first discuss the four main social causes of environmental degradation. First is growing population. Population is a major cause of environmental degradation. Learners, can you tell me why? Because due to growing population, the natural source like water, air, tree, etc. are used very fast. If we keep using the natural resource, they will be finished and the coming generation will not be able to use them. Dear learners, you will be surprised to know that 17% of world population lives in India. However, India has only 2.4 of land area. Second is poverty. Poverty is also a cause of environmental degradation. This is because poor people use more natural resource as compared to rich people. Let us understand how. The poor people use natural resource like tree for building their huts. For cooking in the form of fuel, etc. In this way, they will finish the natural resource faster. Because they are poor, therefore can't buy those resources that are costly. We know that more use of resource will lead to degradation of environment. Third is urbanization. Dear learners, urbanization also leads to decrease in the quality of environmental. For example, environmental degradation. Urbanization is a process in which more and more peoples move from villages to cities in search of work. Can you tell how urbanization leads to environmental degradation? Environmental degradation leads to unplanned growth of cities. As the population increase, however, the resource like homes, water, electricity
decrease. Fourth is changing lifestyle. We should also remember that the lifestyle and the way of living of people has changed during the past few years. The changing lifestyle of people has increased human activity that are causes serious damage of environmental. Let us try to understand this through an example. Earlier, there were not many fridge or air condition in home of Indian peoples. However, today these gadgets have become common. In fact, in many homes, we can find more one fridge and AC. However, harmful gases are produced by these machines. This leads to environmental degradation. Economic factors. Let us now try to learn about the economic factors responsible for environmental degradation. First factor is agricultural development. Learners, agricultural development is very important for every country. However, sometimes it badly affects environment resource. Use of fertilizer and pesticides lead to increase in agriculture and production. However, they spoil the land and water and leads to environment and land degradation. Second factor is industrialization. Growth of factories and industries is called industrialization. It leads to environmental degradation. The waste material coming out of these factories goes directly into ponds and rivers. Those polluting the water resource. While the gas coming out from these industries are also harmful. Learners, now we can discuss the result of environmental degradation. We have learned that due to harmful gases, fertilizers, pesticides, etc., pollution of air, water, and soil take place. Now we can talk about sustainable development.
Learners, we have learned that economic development has led to environmental degradation. As in order to make progress, human being overuse the natural resource. In this way, these resources like tree and water will not remain available for our next generation. However, today the concept of sustainable development is becoming very popular. Sustainable development is that development that fulfill the need of the present generation without finishing the resource. So that can be used by the future generation. Therefore, it is necessary that we do not overuse the natural resource like water, soil, etc. so that they remain available for the use of our coming generation also. Learners, now we will learn about the concept of disaster management. However, the first we will know the meaning of disaster. A disaster is the tragedy that badly affects the society and environment. Disaster can be divided into two categories. First, natural disasters, and second is human disasters. First, one is natural disaster. It means a natural disaster takes place due to natural hazards, example, earthquake or flood, etc. And the second is human disaster. It means these disasters are caused by mistake or negligence of human being. For example, global warming. Learners, we have learnt about the meaning of global warming in previous lesson. Disaster management is the management
of resource in order to deal with emergency situation created by many kind of disaster. At this correct that the result of disaster are very bad. However, we can decrease their effect by proper management. The disaster management process has 4 stages. First stage is mitigation. Second stage is preparedness. Third stage is response. And the fourth stage is recovery. Let's understand the first stage, mitigation. All the efforts that can be made to stop disaster from taking place. Are to reduce their efforts are called as mitigation. Now let's understand second stage of preparedness. In this stage, plans are made for the time when the disaster take place. For example, development of emergency shelters and training people. For example, volunteers who will help during any disaster. Let's understand third stage, which is response. This stage includes all those actions that are taken when a disaster take place. For example, police and ambulance. Let's understand fourth stage, which is recovery. The aim of the recovery pass is to restore the affected area to its previous condition. It means to rebuild destroyed property, for example, to rebuild the homes and the other buildings. Learners, let us now revise what we have learned in this lesson. We learned
about the various causes of environmental degradation. We discussed social causes like growing population, poverty, urbanization, etc. We have came to know about economic causes like industrialization. We learned about sustainable development and disaster management. With this, we have reached the end of the today's lesson. I hope you liked watching this video. If you have any queries, you may send your queries to signlanguage@nios.ac.in. For more information, you may visit our website at www.nios.ac.in. That's all for today. Thanks for watching. Namaskar. हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए। NIOS चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ।
NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमय जोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी।